नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज हम विशेष में बात करेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भाषणों पर संकलित पुस्तक पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपराष्ट्रपति के भाषणों के संकलन का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति के तौर पर पहले साल के दौरान एम वेंकैया नायडू के अलग अलग मौकों पर दिए चुनिंदा भाषणों को इसमें रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के चुनिंदा भाषणों के संकलन से जुड़ी किताब का पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विमोचन किया। अपने चुनिंदा भाषणों पर संकलित किताब सिलेक्टेड स्पीचेस वॉल्यूम 1 के विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकतंत्र में विचारधारा से आदर्श व्यवहार ज्यादा जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि जनता को अपने प्रतिनिधियों और संसद में योगदान का रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के विकास और तरक्की के लिए शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, किसान और साझी संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में उनके भाषणों पर आधारित पुस्तक के विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की प्रगति के लिए शिक्षा, ज्ञान विज्ञान और किसानों की उन्नति बहुत जरूरी है। So I have decided to reach out 5 sections of the people. 1 segments, 1 students and university academicians. So I have been visiting number of universities. Since then, so far I have covered 68 universities in this 1 year and 4 months. Then I also started interacting with the scientists, with the technocrats, going to research laboratories and also technical knowledge centers across the country, right from Arunachal Pradesh to Andaman to Jammu and Kashmir. I have also decided to interact with the farming community because agriculture is the basic culture of India. And 54% of the people still depend on agriculture. And agriculture is facing multi-dimensional challenges. That being the case, I have decided to continue to interact with the farming community, understand their problems, know the challenges, and also come out with some solutions and convey the same to the concerned. I have been visiting various cultural bodies because India is rich in culture. Our Indian traditions, our culture, our heritage is looked upon with interest and respect worldwide. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो सार्वजनिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से मिलते रहते हैं। उनकी समस्याओं को सुनना और निदान करने के साथ वो इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि ज्ञान विज्ञान, तकनीक और रिसर्च से जुड़ी चीजों के अलावा संस्थानों को अपने अनुभवों को मानव कल्याण और देश के बेहतर भविष्य के लिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश लगातार करनी चाहिए। I have been interacting with public organizations like industry bodies like CIA, FICCI, ASSOCHAM, and also with doctors, with actors, and with the tractor running farmers, and also people in different vocations. I have been attending their national seminars, international seminars, to understand from them what are the problems, what are the experiences, and also suggesting to them that they must move lab to land, and they must pass on this knowledge. After all, science and research and technology is for the betterment of the human beings, and that should reach them directly. That has been my mission all these days, and I have been continuing with the vision. I assure you, I will continue with the rest of my tenure with this mission to reach out the people and also understand the reality of the situation and also know the solutions they have in mind and the problems they are facing. अपने भाषणों के माध्यम से वक्त के साथ बदलने की आवश्यकता के बारे में आगाह करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें बदलते संदर्भों के साथ बदलने और सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इतिहास भावी भविष्य की नींव है और भावी प्रगति के लिए प्रेरणा का स्रोत। One of the ideas is recalling our past and reflecting on our present as the young India seeks to define and realize its future. This is very much required. Life of a nation, much like individual lives, unfolds in 2 dimensions of time and space. We need to build the future of our nation based on the past and effectively reasoning through the complexities of present. If we have to build on our past, we should be aware of our past and how ancient India
contributed to world's intellectual, social and cultural heritage. Share and care is the core of Indian philosophy. We should continue with that tradition. That's why I have been really advocating all these thoughts to wherever I go, to whichever community I meet, and also try to communicate them the past of India, the glory of India, the need to preserve it, and also the need to enrich it further. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जाति, धर्म और संकीर्ण विचारों से ऊपर उठते हुए राष्ट्रीयता का भाव सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि सब लोगों को इस बात पर पहले विचार करना चाहिए कि हम सब पहले भारतीय हैं। Nationalism is all about this bond with the people who share a common past, a common present and a common future. This commonality should promote camaraderie. This implies transcending the limitations of caste, creed, region and religion. Forging the widest possible bonding in the form of a larger identity. It's all about asserting that I am an Indian first. Everybody should think and act Indian first. Nationalism is an overreaching umbrella under which all our immediate identities are subsumed to form a larger collective. Unfortunately, certain misinformed individuals and organizations are fomenting trouble and creating divisions where none existed before. In a country that has shown the power of peaceful coexistence and non-violence to the world, such acts of bigotry and narrow sectarian should be strongly condemned. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद में अवरोधों पर चिंता जताई। संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं में भी अवरोध और व्यवधान की स्थितियों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने हाल में खत्म हुए अंतरिम बजट सत्र में राज्यसभा में लगातार अवरोध पर चिंता जताई और कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का नहीं हो पाना लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। All of you would have watched with dismay the way the budget session of Rajya Sabha has just concluded. The President of India, the highest constitutional functionary of our country, and whose name every decision is taken and implemented, addressed the members of both the Houses of Parliament. At the start of the session, it is customary and a constitutional propriety that each member of Parliament adopts a motion of thanks for such an address. But in Rajya Sabha, for over a week, no concern was shown to do so, even though I appealed several times. What could have been a platform for discussing all the burning issues became a platform of confrontation and disruption. Finally, on the last day of the session, the motion was adopted without any debate. A precious opportunity for debate on public issues was lost, and debate was given a rebate. कृषि और किसानों के कल्याण की बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपने कृषि के क्षेत्र में सतत विकास और किसानों के कल्याण के लिए लगातार अच्छे प्रयास करते रहना होगा ताकि भविष्य में हम खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित हो सकें। In the interim budget, the government has proposed direct income benefit for over 12 crore small and marginal farmers reeling under distress. While there is a huge political slugfest over the farm sector distress, the parties and the members of the upper house did not deem it fit to discuss and analyze the same and bring fresh ideas to the table. This is one area which needs utmost attention by all, by the parliament, by the Niti Aayog, by the press, by the political parties and people. Because you know that India is a huge country. We have 130 crore population. We have food security, but we don't know what will happen to the future. We must have homegrown food security. You cannot depend on imported food security. So we need to have sustainable development in agriculture and make agriculture viable. People of India expected, many of the members also has given notice for discussion on agriculture, but unfortunately we could not have of that because of disruptions. उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही के लिए नए स्तर को स्थापित करने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने किताब के विमोचन के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन सिलेक्टेड स्पीचेस वॉल्यूम 1 उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके पहले साल के दौरान दिए गए चुनिंदा भाषणों पर आधारित है। इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति के भाषणों को 6 व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें उपराष्ट्रपति के विचार संकलित हैं। इनमें देश दुनिया के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर उपराष्ट्रपति के नजरिए की स्पष्ट झलक दिखती है।
पधार चुके हैं, कृपया उनका स्वागत करें। सिलेक्टेड स्पीच वॉल्यूम 1 पुस्तक में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 400 से ज्यादा कार्यक्रमों में दिए गए चुनिंदा भाषणों को शामिल किया गया है। पहले खंड में संकलित 92 भाषणों को 6 व्यापक वर्गों में बांटा गया है। इनमें विधायी कार्य, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राजनीति और शासन, आर्थिक विकास, भारत और विश्व और मीडिया का कार्य शामिल है। During the first year in the present role, in a nutshell, it is an earnest endeavor to stir the consciousness of all stakeholders to introspect and lend their might to realize the quest of our nation to reach new horizons. I have made a sincere effort in that direction by recalling our past and reflecting on our present as the young India seeks to define and realize its future. 6 प्रमुख विषयों पर आधारित इस पुस्तक के विमोचन पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये विषय देश के हर वर्ग और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति ने मीडिया के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। An important institution of a effective democracy. It should function medium of empowerment for development through informed action. Media, M-E-D-I-A, medium of empowerment for development and informed actions. That is the media, that is the purpose of media. This is the title of one of the chapters in this book. My suggestion to the media is to correlate the text with the context for informed communication to the readers and viewers. Media should expose wrongdoers, those who are violating the sanctity of our parliamentary procedure, legislative procedure and decorum. They need to be critical of such behavior rather than highlight disruptive actions. This is not being done by the media mostly, unfortunately. I appeal to the media to focus on the constructive debates, encourage people who come prepared and make substantive contribution to the functioning of the legislature, thereby bringing changes that are required in the policy formulation of the country, rather than highlighting these acts of unparliamentary behavior and giving encouragement further. Oh, if you do like this, then we will be in the headlines. That is not a headline, it's a deadline. It is not in tune with the main line of the people. That should not be the line of the media. I only hope that they understand this importance also. इस पुस्तक में प्रमुख संस्थानों, विधायी निकाय, न्यायपालिका और कार्यपालिका पर दिए गए उनके भाषणों को भी संकलित किया गया है। The need of the hour is to enhance the functioning of various leading institutions like legislature, judiciary and the executive as per the spirit of our constitution. We need to evolve a new normal in their functioning and ensure a new institutional equilibrium to serve the people of this country. The world order is passing through unprecedented rapid changes, unforeseen directions, posing challenges to our present and future. Young aspirational India is yearning for a transformation. Transformation in governance, transformation in the mindset, transformation in the way we learn, work and live. Ultimately, what each Indian is looking for is to shape our nation into a country that harnesses the innate potential of each individual, to make our country an economically vibrant hub and a country that ensures high quality of life to all its citizens. The prospects of such future are bright. पुस्तक में उपराष्ट्रपति द्वारा अलग अलग विषयों पर दिए गए उनके भाषण को भी संकलित किया गया है। Development, development and development alone must become the agenda of all political parties. Divisive tendencies must be curbed. Divisive thinking must be given up and the positivity must come into public life rather than opposing everything. Opposition has got a right to oppose. That's why I say let the government propose, opposition oppose and let the house dispose. That is the way the house should function. We are likely to be the world's 5th largest economy, soon and possibly. The largest in due course. While faster economic growth has its own advantages, we need to ensure inclusive development. Every section of the society, the downtrodden, the suppressed, the oppressed people, the poor people, the agricultural labor, they all should feel that they have a stake in the development story of the country. The fruits of development should reach them. We need to make our growth more sustainable. I have repeatedly underscored in my speeches that there are favorable winds of change today. There is a sound institutional structure in place. The economic fundamentals are strong.
There is a demographic dividend waiting to be realized. 65% of the Indian population is below 35 years. No other country has got such a young population. We must harness this. We have to only move from ideas to implementation, from rhetoric to action. My dear friends, as I said at the start, my mission as articulated in this book is to connect the India of the past with the present and look at the future possibilities through the eyes of our academic and scientific institutions, through our youth, women and farmers, through our entrepreneurs and industrialists. In short, I believe there are numerous architects of tomorrow's India who just needed a facilitative, responsive, encouraging state to unleash the force of growth. देश के विकास से संबंधित मुद्दों पर उपराष्ट्रपति का भाषण काफी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति के भाषणों की तारीफ करते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें दिल से बोलने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि ये भाषण सार्वजनिक जीवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के व्यापक अनुभवों को दर्शाते हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद थे। चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। मेरे साथ विशेष में इतना ही। नमस्कार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 15 फरवरी को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के चुनिंदा भाषणों पर संकलित किताब सिलेक्टेड स्पीच वॉल्यूम 1 का दिल्ली के विज्ञान भवन में विमोचन किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के चुनिंदा भाषणों को पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एम वेंकैया नायडू को प्रखर वक्ता बताया। उन्होंने कहा कि इस किताब में जिन भाषणों को शामिल किया गया है वो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि इन भाषणों में शिक्षा, प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर कृषि से जुड़े पहलुओं को विस्तार से कवर किया गया है। An accomplished orator, Sri Naidu's speeches reflects the richness of his experience in public affairs, his vision and aspirations, and his expectations and hopes for the future of India. प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उपराष्ट्रपति के भाषणों के संकलन से जुड़ी ऐसी किताबों से हमें एकता का संदेश मिलता है। उन्होंने उपराष्ट्रपति को दिल से बोलने वाला नेता बताया। We owe to our history and to our posterity to seize the moment and write a new story of a resurgent India. Above all, we need to empower our people, and I believe that this book has the capacity to inspire the leaders. Sri Naidu's energy and enthusiasm are indeed infectious. He speaks from the heart, which makes him a much loved and admired orator. Lacing his speeches with rhymes and humor, he makes sure that his speeches are not just thought-provoking, but also memorable. He stands tall among India's leadership, serving as a great example of dedication, hard work to the youth of the country. He is indeed an example worthy of emulation. प्रणब मुखर्जी ने 15 सितंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में दिए गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भाषण का जिक्र किया। The Vice President, in his address on the occasion of International Day of Democracy on 15 September 2017 in New Delhi, said, and I quote, "The ultimate purpose of democratic governance is social democracy, to ensure inclusive development and improvement in the quality of life of all citizens, especially those who are the poorest of the poor and those who have been left out of the democratic process." Unquote. प्रणब मुखर्जी ने 11 दिसंबर 2017 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायिका का महत्व बताने से जुड़े उपराष्ट्रपति के भाषण का भी जिक्र किया। इस भाषण में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद में बहस के गिरते स्तर और अवरोध के बढ़ने की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की थी। On importance of legislatures organized by PRS Legislative Research in New Delhi on 11 December 2017,
the Honorable Vice President said, and I quote, "I do share the concern about the quality of debates and disruption of the proceedings. Barring a few parliamentarians, the overall quality of debates has seen a definite downward trend in the last few decades. The quality of interventions and debates can be substantially enhanced with adequate homework and preparation by the members of parliament." Unquote. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपराष्ट्रपति के भाषणों से मिलने वाले संदेशों के बारे में बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में सांसद अलग अलग दलों से होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के शत्रु नहीं होते। The parliament ends up pursuing sectarian interests. A strong message that I gather from his speeches is that parliamentarians belonging to different political parties might very well be rivals, but never enemies. The ideas and ideologies might be different, but the allegiance is the same to the voter, to the common man, to the cause of democracy. भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रणब मुखर्जी ने उपराष्ट्रपति के 13 दिसंबर 2017 को कोलकाता में दिए गए भाषण का हवाला दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा था कि अब हमें स्वराज से सुराज की ओर बढ़ने की जरूरत है। Sri Naidu rightly pointed out in his address on revitalizing parliamentary democracy in Kolkata, held on 30th December 2017, and I quote, "India's parliamentary system has matured over the years and stood the test of the time. There is need to move from Swarajya to Surajya. A clean, competent, people-oriented, proactive administrative leadership is the need of the hour." प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वो हमेशा से ही एम वेंकैया नायडू के विचार और शब्दों के प्रशंसक रहे हैं। आपका जीवन, ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी राज्यसभा दृढ़ टीवी। इच्छाशक्ति।